নমস্কার, আমি দিব্যাংশী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स। इसका मतलब है मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। बंगाली अंदाज इसलिए क्योंकि जो शख्सियत तो मेहमान हमारे साथ जुड़ी है वो बहुत ही प्यारी सी है और प्यारे से स्टेट बहुत ही मीठे स्टेट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, तो हमने सोचा उनका स्वागत उन्हीं के अंदाज में करें। So, welcome Tania Sharma, and she has cleared her IBPS PO 2022 examination. Welcome to Ministry of Current Affairs. We are very glad to have you today. Thank you so much, Divyanshi. It's literally my pleasure to be on a platform like this. And I'm so happy that I could welcome you in your own dialect because it automatically feels such a connect when you speak in the same language, and that's how the beauty of amalgamation of India works. Exactly. You are like very correct. As soon as you see someone speaking your language that you have grown up to, and you immediately connect to that person, and that's very special. So now coming Thank you for back, that. Tanya, you've cleared this examination. I'm sure ये बहुत बड़ा सपना होगा, और जब सपना हम हासिल करते हैं तो I'm sure it's a very different feeling. How do you feel about yourself currently? जब 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आया तो वो मोमेंट बहुत ही सरियल सा था। एक जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो इतने सालों से, फाइनली when you see that you have achieved that, then that's a very special moment for you. लेकिन रियलाइज तब होता है जब आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि इतने दिनों से आप जिन प्लान्स को टाल रहे थे कि जब जॉब होगी तब ये शॉपिंग करेंगे या फिर जब जॉब होगी तब यहाँ पर घूमने जाएंगे, तो व्हेन दैट हिट्स यू इट फील्स वेरी स्पेशल। Let's repeat that. I'm sure it must be a very special feeling that when it hits you, with the moment you said when it hits you, it's a very special feeling. And जिस चीज के लिए आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे हो, which you envisage something is your own and you get it, I'm sure it's a very, very special feeling. So Tanya, coming back to the interview, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने ग्रेजुएशन के बारे में, और कैसे सोचा कि एक बैंकर बनना है। सो मैंने ऑनर्स किया है, लाइक आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम लोरेटो कॉलेज इन ज्योग्राफी, एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स किया साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में। और मेरा सपना था, लाइक माय मेन एम वाज टू क्लियर यूपीएससी सीएससी। सो 2018 में मैंने उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, एंड 2019 वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट क्योंकि मुझे पता था कि उतना टाइम मैं नहीं दे पाई हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2019 and kept my preparation on for UPSC CSC itself. But then 2020, everyone knows what happened. It was the year COVID struck. So that year I didn't give UPSC. But then my best friend, he suggested me there's a separate line where we must also focus. We should not be like stagnated towards one particular goal if you want a government job. So IBPS PO में मैंने फॉर्म भरा लेकिन उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो दैट वाज आल्सो अ फेल्ड अटेम्प्ट। बट मेरे बेस्ट फ्रेंड ने क्लियर किया, and the feeling that you were preparing together for something but then one person has got the job but you have been left behind, it's scary. But he has been all throughout this journey with me. तो 2021 में फिर से मैंने पीओ दिया, लेकिन उसके पहले यूपीएससी सीएससी मैंने प्रीलिम्स दिया था। तो जीएस पेपर बड़ा अच्छा गया, बट मैं सीसैट में फेल हो गई थी, which is something people don't even imagine can happen. Then मैथ से तो रिश्ता बहुत पुराना था, क्लास 10 में बस वही लास्ट था, सो बहुत ही वीक थी मैं उसमें। 2021 में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, लेकिन मेंस वाज अ डिजास्टर अगेन। 2022 I was like, it's been an extremely long journey. Up to I have to be very focused on one particular thing. So maths में again, as I'm telling you, उस बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मैथ सिखाया एकदम शुरू से, फ्रैक्शन, डेसिबल, एवरीथिंग। So and I played on my strengths. Like you have to understand that IBPS PS is something that you have to play on your strength and weakness को ऐसे level पर लेके आओ that it doesn't pull you down. So that has been my preparation, and then finally, on the basis of current affairs and English only, I have been able to like clear this exam and interview, of course. So Tanya,
as you said that you started your preparation with a different examination and then you landed up in a Hmm. different examination. But I want to Yeah. understand कि एक एग्जामिनेशन जिसके बारे में हम सोचते हैं उसके बाद हम दूसरे एग्जामिनेशन जब हम लिखते हैं तो एक थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है हमारे फोकस में Hmm. हमारे अप्रोच में चेंजेस लाने और आपने बताया कि सीसैट की वजह से यू कुडंट क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स Exactly. बट जब हम बैंकिंग की तरफ आते हैं तो अ मेजर सेक्शन इज क्वांट रीजनिंग. How did you Exactly. manage? Because that is very important कि एकदम ही बेसिक से पीओ एग्जामिनेशन का प्री क्लियर करना चाहे मेंस क्लियर करना एक अपने आप में अचीवमेंट है. यूपीएससी क्लियर नहीं होने के बाद आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट कीप वेटिंग फॉर वन एग्जाम विच इज सो लाइक डिफिकल्ट टू क्लियर. अगर प्रीलिम्स हो भी जाता है तो मेंस होगा या नहीं होगा, मेंस अगर होता है तो इंटरव्यू होगा. सो आई नीड अ जॉब विच इज एक्चुअली द करेंट सिचुएशन ऑफ एवरी youth in India. So my main focus was to land somewhere and then I can keep preparing for the exams that I wish to clear. So initially जब मैंने start किया, the first thing that I did was uh, 5 to 10 days तक सिर्फ मैंने mock test दिए थे in order to analyze कि where do I stand. So वहां से I understood कि English will be my weapon, reasoning I'll be able to manage, but maths is something which can like destroy the entire thing. So रीजनिंग के लिए मैंने बस मॉक्स पे ही डिपेंड किए थे फॉर प्रीलिम्स लेवल. And maths was a subject where I started from the extreme basic because that is something which will help you to clear even mains because prelims is not the only target. So clearing the basics of quants and then practicing, I followed the mnemonic maps and I kept reminding myself map is something, mocks, analyze, practice, study. This cycle helped me to clear the exam. सो जो आपने बताया ना ये पूरी साइकिल को रिपीट करते हुए गए Hmm. थोड़ा सा Hmm. डिटेल में बताएं कैसे उसको फॉलो किया वर्क प्लान क्या बनाया हम हमेशा बात करते हैं एक्शन प्लान वर्क प्लान उसके बारे में आप जरा बताएं हमें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं लेकिन शायद कुछ एक आध ऐसे ग्रे एरियाज होते हैं जैसे आपने बताया कि सी सैट मैथ्स था बट उसको सुधार सकते हैं तो थोड़ा ये जो साइकिल आपने बताई है मैं चाहती हूँ डिटेल में बताएं आप. जब आप IBPS PO की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज आपको हर सब्जेक्ट में बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा. बट आई थिंक दैट इज अ मिथ. आपकी अगर एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो you just have to crystallize your other gray areas. And for that, the only weapon that you have in your hand is consistency. Because when you chalk out a plan, तब आप देखोगे कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ऐसे आपको रिजल्ट्स महसूस नहीं होंगे. बट वेन यू सी कि 2-3 महीने हो गए, आपने जो फर्स्ट मॉक जो दिया था एंड 3-4 महीने के कंटिन्यूअस प्रिपरेशन के बाद विदाउट लैकिंग योर फोकस, जहां पर आप स्टैंड करते हो, दैट्स यू हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई फॉलोड. आई सेट वेरी स्मॉल गोल्स एंड टारगेट्स फॉर माई सेल्फ कि आज अगर ये चैप्टर मुझे करनी है, आई कंप्लीट दिस चैप्टर, आई practice this, and then I'll move on to the next. आई डेंट लीव एनीथिंग बिहाइंड. लाइक प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मैंने एक साथ की थी फॉर मैथ्स के लिए. इसीलिए इस बार जब मैथ्स का पेपर इतना डिफिकल्ट था, I couldn't have like imagined to attempt anything, but then 7 marks I got. I'm not saying that's a huge score, but I think that is the best of my capability. That is all I could have done, and that is all on the basis of setting small targets and being consistent about it, rather than setting something so huge that you won't be able to achieve. So Tanya, uh, setting yourself for something huge that you won't achieve, so how should be the realistic targets? How should one make the realistic targets? That is where mocks come into the play. You have to attempt as many mocks as you can and then analyze them. Which questions you weren't able to attempt, which were the ones where like you have already practiced but yet you were not able to attempt. That is where you analyze yourself
and then see कहाँ आप पीछे रह गए हो, and then come back to that chapter. There's no harm or there's no rush about it. You just need to follow that particular thing very religiously. That you will complete one section and then only will you move on to the other. स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। पहले आप बेसिक क्लियर करते हो, बट व्हेन डज दिस Hmm. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो, और ये जो मॉक टेस्ट लगाने वाला गेम है, व्हेन डज इट एक्चुअली कम्स इन द पिक्चर? मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसको जानने के लिए, बिकॉज हम बात तो करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन हाउ डज इट कम, व्हेन डज इट कम इनटू द पिक्चर? See, I think that you yourself are the best judge of where you stand. So I started my preparation by attempting mock test. So some people may suggest that पहले आप syllabus अच्छे से देखो, syllabus की तैयारी करो, then you start attempting mock test. But I approached a very reversible thing. मैंने पहले mock test लगाए, उससे मैंने पता लगाया कि where are the places I lagged behind. Then I followed the syllabus, and उसके बाद I came back to the previous year question papers. And IBPS PO is something जहाँ पर उतना paradigm shift नहीं होता है, at least prelims में. That is something very consistent. Mains is the game changer. But then if you're following the syllabus एकदम religiously, then I don't think that should be a problem for you or for anyone. Even if a person is weak, is very weak in one particular subject, I think that can be उसकी भरपाई दूसरे सब्जेक्ट से हो सकती है. एंड इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जिस पे लोग बहुत कम फोकस करते हैं, बट एक्चुअली दैट इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग. एंड अगर किसी की इंग्लिश भी वीक है एंड सपोज वो मैथ्स में भी वीक है, जैसे मेरी कुछ साथियों की है, सो आई थिंक उसको आप कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स. एंड करंट अफेयर्स इज समथिंग जिसमें कोई वीक नहीं हो सकता है. इट्स जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी, like setting your daily target goals and completing them. If you keep them piling up, then that will be very difficult for you. But then जैसे मैं सर की वीडियोस भी देखा करती थी, रोज देखो, उनके नोट्स बनाओ, एंड दैट्स इट, योर वर्क इज डन. तानिया, बहुत ही अच्छे से आपने बताया, एंड आई एम श्योर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वी आर द वेरी गुड जज ऑफ आवर ओन capabilities in everything we do. I think that's one of the most important thing, Tanya. Tanya, how was your interview experience? कैसा था? How the questions were put up to you? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में. Actually, this is the question I've been waiting for from you, because I cannot like explain how much grateful I am to sir. Because the videos, when you see, YouTube is the platform where you rely for your preparation. And watching those, I was like, came across certain playlists that watch this playlist and your interview preparation will be done. But over there, the number of videos actually play with your mind. Like इतने सारे videos हैं, इनको complete करना है. That is not something that I followed. I followed only Gaurav sir's interview free videos, and the way he gave the remarks to every particular student. Actually, I wanted to be a part of it as well, but then I couldn't be. लेकिन सर से मैंने social media platforms पे बातें की थी, and I was so surprised that without even paying any fees or something, he responded to every minute question of myself. Like I asked him that this is my बैकग्राउंड, यहाँ पर मैं काम करती हूँ, मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने चाहिए. And then I prepared my own answer and got it checked by him, and he literally replied within a couple of hours. And I gave my entire, like, whatever I have been able to achieve in this interview marks, it's all because of him. I followed nothing except his videos. And coming back to your original question, how was my interview experience? So it was like very good. I was very confident about my background, and most of the questions were from that itself. Like as I told you, I've been working as an assistant to member of parliament. So कुछ questions polity से थे, कुछ questions. I am extremely a cat fanatic. So cats के बारे में questions थे. They asked me about PETA, and then current affairs से questions थे, जैसे परमवीर दिवस कब मनाया जाता है, विच वॉज एग्जैक्टली वेरी रिलेवेंट, एंड सर की वीडियो में मैंने देखे भी थे. एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी थे कि अगर आपकी रूरल पोस्टिंग हो जाती है, तो आप किस तरह से बैंक के एसेट्स को बढ़ाओगे. दैट इज बेसिकली हाउ विल यू सेल योर ओन लोन्स और सेल योर ओन प्रोडक्ट्स.
And along with that, there were questions from geography. So the interview lasted for 7 to 8 minutes. It was a very easy thing. I think that is the most easiest part of your entire preparation, like entire exam set. तानिया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले उन सारी चीजों को रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो तानिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाउ टू रिवाइज थिंग्स बिफोर द एग्जामिनेशन। So the approach I followed was English के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा था, because as I said कि यार पूरी बैकग्राउंड इंग्लिश में ही रही है, तो उसके लिए I cannot say anything. But then maths के लिए I made जितने भी formulas हैं, I noted them down into one single page. Then squares, cubes, tables, that is something you have to revise every day. Just exam के पहले ही करने से तो होगा नहीं. You have to keep revising them. Then fraction to percentage conversions, all these things. And reasoning, maybe I don't think कि आप last moment में कुछ revise कर सकते हो. रिवाइज के लिए आपको एंटायरली फोकस करना पड़ेगा जीके पर, लाइक करंट अफेयर्स एंड जीके. एंड एज आई सेड कि आप डेली जो नोट्स फॉलो कर रहे हो, जस्ट नोट देम डाउन सिंगल वर्डेडली. व्हाट आई फॉलोड एंड विच हेल्प मी अलॉट इज, मैंने करंट अफेयर्स को स्टेट वाइज सेग्रीगेट कर लिया था. लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे इस बार भी था कि स्पाइस कांग्रेस कहाँ पर होने वाला है, या फिर कहाँ पर बैटिंग को बैन कर दिया गया है. आप अगर उसको रेगुलर पढ़ोगे, आपके लाइक समवेयर द बैक ऑफ द माइंड इट विल स्टे. बट व्हेन यू हैव इट वेरी इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, देन आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी. सो फॉलो योर डेली टारगेट्स, बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एंड कीप रिवाइजिंग एवरी डे. तानिया, हाउ स्टडी IQ Gaurav sir has been part of your journey? सो माई एज आई टोल्ड यू अगेन कि मैं पूरी क्रेडिट अपने इंटरव्यू मार्क्स की सर को देती हूँ. And that is something that I got 78 in an interview, in this interview, जहाँ पर कोलकाता में कहा जाता है कि शायद इंटरव्यू में इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज आई सीन पहले के रिकॉर्ड्स भी, चाहे कोरा पर हो या फिर यूट्यूब पर हो. तो इंटरव्यू का मेरा पूरा क्रेडिट सर को जाता है. एंड देन सर के जो डेली वीडियोस आते थे उनको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया. और नॉट जस्ट दैट, द वे ही स्टैंड्स बिसाइड द स्टूडेंट्स by not just motivating them. I don't think motivating is the correct word, but showing them the direction, how you should be as a student. I think that has been the, and I'll keep that carrying on with myself. That is not something that I'll say कि बस यहाँ तक ही था. That is a like a lesson for life. So Tanya, I think we are very glad and very proud of you. Gaurav sir is very proud of you. और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. We wish you good health, good luck. Thank you.